we are going to study indexes in SQL. When we studied about this optimization of queries in SQL, we have an overview about these indexes, and we got to know that there are two kinds of indexes in SQL: clustered and non-clustered. Fine. Before that, I just want to know, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So at my screen, you can see one document present. The topic is, that is the heading is, why are indexes important in SQL, and we are going to read about all about indexes in SQL. So let's start this. We will start with an overview. Indexes in SQL are like an index that can be found in our book. This thing I told you already yesterday, right? So indexes are individual lookup tables in SQL. They are created on tables and views. So when we create an index on a table, एक लुकअप टेबल बन जाता है वहां पर, जहां पे हमारे पास या तो एड्रेस होगा हमारी वैल्यूज का, कॉलम्स का, ठीक है, हम कह सकते हैं कि रोज का एड्रेस सेव हो जाता है एक दूसरी टेबल में जाके, ठीक है, या फिर वही उसी टेबल में सॉर्टिंग हो जाती है और उसका एक सॉर्टिंग हो जाती है और जो रॉ डेटा है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडेक्स वी आर यूजिंग। ओके, सो व्हाई आर इंडेक्सेस यूज्ड? Indexes are used to speed up the data retrieval process via query from the tables. तो ये चीज हमने कल ही देख लिया था कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इंडेक्स का यूज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेरी को डेटा रिट्रीवल में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर टाइम नहीं भी लग रहा है लेकिन फिर भी हम उसे स्पीड अप करना चाहते हैं, तो वी नीड टू यूज द indexes. If a book does not have an index and we are told to find a particular chapter, we need to look for every page of the book, okay, from start to end, ठीक है। तो हमें ये वाला एग्जांपल मैंने कल भी लिया था, अगर हमें किसी बुक में किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, लेट्स से चैप्टर नंबर 6, तो हम उसको एक एक पेजेस उसके चेंज करके देखेंगे। इससे अच्छा है कि हम इंडेक्स पे जाएं और पर्टिकुलर चैप्टर का पेज नंबर पहले ही फाइंड आउट कर लें और डायरेक्टली जंप करें उस पेज नंबर पे। तो हम बुक्स में ऐसे इंडेक्स का यूज करते हैं। सिमिलरली सीक्वल में भी वही होता है, ओके। So, but if the book contains an index, we can look for the page number of that chapter and locate the chapter according to the page number given in the index. So, the index in the book drastically decreases the time taken to find the chapter in the book. Likewise, indexes in SQL are used to enhance the performance of a query. Okay, if indexes are not present, then the database query engine needs to look up the desired data in the whole table from the first record to the last record, which means it needs to perform a table scan. ओके, तो कल मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, जब डेटा रिट्रीव होने जाता है किसी टेबल में से तो दो तरीके की स्ट्रेटजी ये यूज करता है। एक तो हम कह सकते हैं टेबल स्कैन और एक दूसरा होता है टेबल सीक, ठीक है। अगर किसी टेबल के ऊपर इंडेक्स पहले से नहीं लगा हुआ है तो जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे तो वहां पे वो टेबल का स्कैन करेगा, ओके। और फिर ये परफॉर्मेंस के केस में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी इस केस में जब हम टेबल स्कैन करेंगे विदाउट एनी इंडेक्स, ओके। तो अगर हमें कुछ डेटा रिट्रीव करना है और कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स उससे उठा के लाने हैं तो वो सारे रिकॉर्ड्स पहले चेक करेगा स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, फिर चेक करेगा ये हमारी कंडीशन को या फिल्टर को मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर वो फिल्टर को मैच कर रहा है तो ठीक है, वो उसे उठा लेगा, नहीं तो वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे वो फर्स्ट रिकॉर्ड से लास्ट रिकॉर्ड तक सारा चेक करेगा, तो इसे बोलते हैं टेबल स्कैन, ओके। A table scan is terrible in terms of performance perspective. Okay, so at my screen you can see a table. It is an employee table with employee ID, employee names, employee salary and employee gender. Fine. तो अभी मैं एक क्वेरी कर रही हूँ मेरी एम्प्लॉय टेबल के लिए, वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेरी है, okay. Select employee name, employee salary from employee, okay. So from the employee table I am selecting employee name and employee salary for those employees where the employee salary is greater than 8,000 and less than 15,000. Fine. तो अभी मेरी टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ है, तो it will go and it will scan the table, the whole table, okay.
The employees table above is not having any index right now. To fetch all the employee names which are having salary greater than 8,000 and less than 15,000, the query engine needs to search the whole employee table from its first row to the last row. It will result in a table scan, which in turn reduces the performance, especially when the table contains too many records. Okay, so when we have large and huge data, तो ये performance issues फिर यहाँ पर आते हैं. Okay, to avoid these performance issues, we will now learn how to create an index on the table and how it is going to drastically improve the performance. Right? So, how to create an index on a table? To create an index on a table, we need to use create index command. Okay, the syntax is shown below. तो भी आप मेरी स्क्रीन पर एक देख सकते हैं क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है. क्रिएट इंडेक्स, देन इंडेक्स का नाम हमें यहाँ पे देना है, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, फिर टेबल का नाम देना है और उसके बाद फिर पर्टिकुलर कॉलम, जो स्पेसिफिक कॉलम जिसके ऊपर हम इंडेक्स लगाना चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारी टेबल उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए. So this query we need to use to create an index that you can see on my screen. Create index, index name on table name, column name. Fine. Therefore, we are using the same syntax to create an index named index employee. Okay. Over the employee table with the employee salary column as shown below. अभी हमारे पास जो टेबल है वो employee टेबल है, ठीक है, और हम उसके ऊपर एक इंडेक्स लगा रहे हैं और इंडेक्स का जो नाम होगा वो होगा इंडेक्स अंडरस्कोर एम्प्लॉय. ठीक है, और जो हम कॉलम इसमें यूज करेंगे इंडेक्स लगाने के लिए वो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी. Okay, and we want it to be sorted in ascending order. So I will write this SQL statement. Create index, index underscore employee. This index underscore employee is the name of the index which is applied on the table employee on the column employee salary with respect to the sorting of ascending order. Okay, fine. The index created will store the salary of each employee arranged in ascending order as shown below. ओके, तो अभी क्या हुआ, ये जो मैंने इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स का कोई टाइप मेंशन नहीं किया है, तो ये एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी इंडेक्स का टाइप मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेक्स बन जाता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है. अब नॉन क्लस्टर्ड और क्लस्टर्ड में क्या डिफरेंस है, दिस वी विल सी in few minutes. Okay, so first you need to check, if I create this index on my table, then what happen, my employee table will not like this. Okay, so employee id 1 2 3 4 5 and then employee name. Okay, and then this employee salary and employee gender, this is the employee table that we have. Okay, fine. Employee salaries are arranged in ascending order after creating an index. Okay, so you can see this employee salary has been arranged in the ascending order when I created the index. Okay, so when I created the index, I also get some row address for each and every employee salary column that is present in my employee table. Fine. So here I have written row address 1. It will not like in SQL, it is not like row address 1, row address 2. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 रो एड्रेस के नाम दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक एड्रेस आता है बेसिकली. ठीक है, और वो फिर हमारे एम्प्लॉय की सैलरी को, पर्टिकुलर सैलरी को पॉइंट आउट करता है. फाइन. सो एक्चुअल इंडेक्स में बी डिफरेंट इन लुक. सो ये मैंने यहाँ पे रो एड्रेस 1 2 3 4 5 जो दिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है. यहाँ पे बेसिकली जो इंडेक्स जो एड्रेस होगा रोज का वो डिफरेंट होगा सीक्वल. ठीक है, नाउ अब मैं सिमिलर जो मैंने पहले क्वेरी लगाई थी, मतलब एम्प्लॉयज का नेम सैलरी फाइंड आउट करना है एम्प्लॉयज टेबल से, और जो वही वाले एम्प्लॉयज के नेम और सैलरी आने चाहिए जिनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है और 15,000 से कम है. सो आई एम यूजिंग द सेम सीक्वल स्टेटमेंट अगेन.
Fine. So after creating the index column over the employee table using the employee salary column, when we will find the employees with salary greater than 8,000 and less than 15,000, using the above query again, then the index helps the query engine to fetch the required records as the records are arranged in ascending order. तो अभी क्या हुआ है, इंडेक्स लगाने के बाद मेरे ये जो रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय सैलरी के, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में sort हो गए. Okay, so it will quickly take up the desired records and enhance the data retrieval speed. तो इसे हम फिर इंडेक्स सी कहेंगे. जब हमारे पास सॉर्टेड डेटा है तो अगर हम मैनुअली भी जाके देखें, कुछ फाइंड आउट करें टेबल में, अगर आपके पास डेटा सॉर्टेड है तो आप आराम से जाके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो इस प्रोसेस को हम लोग इंडेक्स सीक कहते हैं. ओके, सो व्हेन वी अप्लाइड सम इंडेक्स ओवर अ टेबल, द प्रोसेस दैट इट यूजेस इज कॉल्ड इंडेक्स सीक. ओके, तो पहले बिना इंडेक्स के जो प्रोसेस ये फॉलो कर रहा था डेटा को रिट्रीव करने के लिए, वो था टेबल स्कैन. फाइन, नाउ इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स सीक आफ्टर अप्लाइंग द इंडेक्स, ओके, ओवर द टेबल ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम. तो अभी आप देखिए, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ और इससे हम परफॉर्मेंस को समझते हैं कि क्या हमारे मतलब जब हमने किसी टेबल के किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स को अप्लाई किया तो हमारी परफॉर्मेंस में, मतलब डेटा को रिट्रीव करने की जो परफॉर्मेंस होती है, मतलब सीपीयू टाइम कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, उसने कितना इनपुट आउटपुट यूज किया, तो वो सब देखने के लिए अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो यूज टैग डेटा. टैग डेटा इज बेसिकली द नेम ऑफ माय डेटाबेस हियर एंड आई हैव दिस टेबल टीबीएल ऑथर्स. So what I am doing here, you can see a query at my screen. Use tag data, select star from TBL authors. Okay. So TBL authors में अभी क्या है, मेरी जो टेबल authors है इसमें ID है authors का, name है और country है. Fine. So you can see it here. तो अभी मेरी इस टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ है, मैं सिर्फ टेबल से डेटा फेच करके लेकर आ रही हूँ. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखिए इसने कितनी रोज, यहाँ पे इन्होंने जो मैसेज दिया है, सम रोज आर अफेक्टेड. ओके, सो मैनी रोज आर अफेक्टेड हियर. तो इसमें टेबल में जितना भी डेटा है वो सारा ये लेकर आ गया है. ओके, नाउ मेरे पास एक और टेबल है, ये टीबीएल बुक्स मैंने यहाँ पे बताया, इसके अंदर भी उतनी ही रोज है जितनी टीबीएल ऑथर्स के अंदर थी. ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको भी यहाँ पे टेबल दिखाई. अगर मैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स को ऑन करती हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो एक रूल था, या रूल कह सकते हैं या फिर आप टिप कह सकते हैं, कि हमें हमेशा स्टेटिस्टिक्स को ऑन करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी क्वेरी क्या परफॉर्मेंस दे रही है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जो एक स्नैपशॉट देख रहे हैं मेरी स्क्रीन, ओके, सो ये जो भी स्नैपशॉट आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, इसमें मैं यूज टैग डेटा, दैट इज द डेटाबेस नेम टैग डेटा, एंड देन आई एम स्विचिंग ऑन द स्टैटिस्टिक्स टाइम बाय यूजिंग वन क्वेरी, दैट इज set statistics time on, and then I am executing one SQL statement, that is select star from dbo.tbl books where price is greater than 70 and price is less than 90. तो अभी मैं मेरी जो टेबल बुक्स है उसमें से कौन से वाले डेटा को फैच कर रही हूँ जहाँ पे कि मेरी बुक्स का जो प्राइस है वो 70 से ज्यादा हो और 90 से कम. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आई एम स्विचिंग ऑफ दिस स्टेटिस्टिक्स टाइम, ओके, by the statement set statistics time off. Okay, and then when I run this thing, क्या होगा यहाँ पे, ये मुझे बताएगा कि रिजल्ट्स में आप देखेंगे, जो रिजल्ट्स पेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिजल्ट्स में तो डेटा आ जाएगा, मतलब वो सारे रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएंगे जहाँ पे कि प्राइस 70 से ज्यादा है और 90 से कम है. ठीक है, लेकिन एक मैसेजेस वाला एक और पेन होता है हमारे पास, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या स्टेटिस्टिक्स है. ओके, सो सीक्वल सर्वर एग्जीक्यूशन टाइम आप देखिए यहाँ पे, सीपीयू टाइम 219 मिली सेकेंड्स एंड elapsed टाइम सम 3337 मिली सेकेंड्स. ओके, तो ये कब हुआ, जब मेरी टेबल के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है. फाइन, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जो मेरी ये टीबीएल बुक्स है इसमें मैं एक क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, और प्राइस कॉलम को यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ. फाइन, ओके, तो मैं अभी क्या स्टेटमेंट यूज करूंगी, एक क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाने के लिए यूज टैग डेटा
create clustered index TBL books on the table TBL books and the column name is price and it should be in the ascending order. तो भी ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये क्लस्टर्ड इंडेक्स बना देगा मेरी टेबल के ऊपर टीबीएल बुक्स के ऊपर, जिसका नाम होगा इंडेक्स का इंडेक्स अंडरस्कोर टीबीएल बुक्स, और कौन सा कॉलम यूज करके बनाएगा, प्राइस वाला कॉलम यूज करके बनाएगा। और ये जब इंडेक्स बन जाएगा तो मेरी जो प्राइस है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो मेरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा और एक क्लस्टर्ड इंडेक्स उसके ऊपर बन जाएगा। फाइन। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अगेन अपना स्टेटिस्टिक्स ऑन करूंगी इसमें मेरी क्वेरी के लिए, वही सेम क्वेरी मैं लगाऊंगी, ठीक है। अभी भी मैं वही टीबीएल बुक से वो वाला डेटा फैच करना चाहती हूँ जहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन 70 हो और लेस देन 90, ठीक है। तो सेम थिंग आई एम डूइंग हियर अगेन, okay, set statistics time on and off and between it I am using one SQL statement जिसका मैं स्टेटिस्टिक्स देखना चाहती हूँ कि उसको एग्जीक्यूशन करने में क्या चीजें यूज हो रही हैं, मतलब सीपीयू टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, कंपाइल टाइम कितना है, लैप्स टाइम कितना है, वो सब चीजें मुझे देखनी है। तो मैं ये वाले स्टेटमेंट्स को यूज करके कर सकती हूँ और बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स आई नीड टू राइट माई सीक्वल स्टेटमेंट। फाइन। ओके। तो अभी मैंने इंडेक्स लगाया है यहाँ पे, तो उसके बाद मेरा जो सीपीयू टाइम है वो थोड़ा कम हो गया है, इट इज 203 मिली सेकेंड्स एंड इलेप्स टाइम इज 3327 मिली सेकेंड्स। तो ये दोनों टाइमिंग्स आप देखेंगे पहले से अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़े थोड़े कुछ कुछ मिली सेकेंड्स यहाँ पे कम हो गए हैं। तो लेकिन ये चीज सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स इसीलिए है क्योंकि मेरे पास डेटा कम है, ठीक है। लेकिन जब डेटा ज्यादा होगा तो यही मिली सेकेंड सेकेंड्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइन। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब मेन जो डिफरेंस होता है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स। एनी डाउट? नो। ओके, so can we discuss the differences between clustered and non-clustered index in SQL Server? Any one of you can answer. Yes, ma'am. सो अगर हम बात करें क्लस्टर्ड इंडेक्स की, तो ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को सॉर्ट कर देता है एंड इट स्टोर्स द एक्चुअल डेटा रोज इन ऑर्डर। जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसी को, उसी की जो डेटा रोज है उनको ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। फाइन। और स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। अगर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करें सो इट स्टोर्स ओनली द इंडेक्स। ये क्या करेगा, सिर्फ वो रो एड्रेस को स्टोर करेगा और वहां से एक पॉइंटर बना देगा एक्चुअल डेटा रोज के लिए। राइट। तो इसमें हमारा रो एड्रेस स्टोर होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में, और क्लस्टर्ड इंडेक्स में डेटा खुद ही सॉर्ट हो जाता है और वो दोबारा से स्टोर होता है एक ऑर्डर में, या तो सेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी मैंने मेंशन किया है इंडेक्स बनाते टाइम, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बार टेबल सॉर्ट होके बैठ गया है हमारे पास, स्टोर हो गया है, तो फिर अगर हम दूसरा एक और इंडेक्स उसके ऊपर लगाएंगे तो वो सॉर्टिंग शफल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंडेक्स बना के एक पॉइंटर बनाता है, तो हम कितने भी, मतलब सीक्वल सर्वर में अभी अप टू 999 हमारे पास लिमिट है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, एक बार मैंने इंडेक्स बनाया नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, तो ये उस इंडेक्स को स्टोर करके एक पॉइंटर बना देगा एक्चुअल डेटा रोज के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने दूसरा बनाया, तो अगर मैं दूसरा इंडेक्स बनाती हूँ तो वो उसको कहीं और स्टोर करके दूसरे पॉइंटर्स बना देगा, तो डेटा तो शफल नहीं होगा, वो अलग से जाके बैठेगा इंडेक्स और पॉइंटर। फाइन। तो ये होता है कि हम ये वाले दोनों पॉइंट्स याद रखें कि बेसिकली क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता है, और ये कैसे डिफर करते हैं। अभी एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करें, इफ यू थिंक ऑफ अ क्लस्टर्ड इंडेक्स, इट इज लाइक अ फोन बुक, ओके, सॉर्टेड बाय नेम। जो फोन बुक होता है ना, फोन डायरेक्टरी, पता नहीं अब आता है या नहीं, पहले तो आता था फोन डायरेक्टरी, जब हमारे पास सिर्फ लैंडलाइन होते थे, मोबाइल्स मतलब का यूज बहुत कम होता था, तो एक फोन डायरेक्टरी आती थी, आई थिंक आप लोगों ने सबने देखी होगी,
ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, वो सॉर्टेड होते हैं नेम के अकॉर्डिंग। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल पेजेस अरेंज होते हैं। ठीक है, तो वो एक क्लस्टर्ड इंडेक्स की तरह काम करता है। फाइन। और अगर हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करें तो इट इज सिमिलर टू द इंडेक्स दैट वी हैव इन आवर टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये एग्जांपल तो हम लोगों ने कल भी देखा था और आज भी देख रहे हैं। ठीक है, इट टेल्स यू वेयर टू फाइंड अ टॉपिक पॉइंटर टू द डेटा। ठीक है, तो जैसे हम बुक खोलते हैं उसमें इंडेक्स होता है, तो इट विल लाइक अ पॉइंटर टू द डेटा कि आप उस पेज पे चले जाओ, और जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें एक्चुअल वो पेज का कंटेंट दिखाई देता है और हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फाइन। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम इट? So in interviews, this kind of indexing, that is the types of indexing and why we use index, what is the use of index in query optimization, ये पूछा जाता है। तो वो चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अभी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। मैम ये प्राइमरी की जो है वो भी एक ही रहती है टेबल पे, तो जो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा वो नॉर्मली प्राइमरी की पे ही बनता है या कोई और फील्ड पे भी बना सकते क्लस्टर्ड इंडेक्स हम किसी भी फील्ड पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने एम्प्लॉय टेबल देखी, ठीक है, तो उसमें प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, है ना? हैं? जी जी। लेकिन मैंने अभी जो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाया वो सैलरी पे बनाया। ठीक है, ओके। तो किसी भी कॉलम के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स वी कैन क्रिएट द इंडेक्स। ओके, बट इट शुड बी ओनली वन इन केस ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स। एनी अदर डाउट्स? No. Okay. So today we are going to complete SQL. Okay. Most of the topics have been completed. Only 2 or 3 are remaining. Today we will discuss them, and then we will move to Power BI today itself. Okay. So today I will explain. I will give some introduction kind of thing of Power BI to you, and then we will start Power BI in the next class. Okay. So. You can do one thing. You can install Power BI desktop on your system to get an hands-on while learning. Okay, अगर आपको लर्न करने के साथ साथ हैंड्स ऑन करना है पावर बीआई पे, तो मैं जो आपको यहाँ पे अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे करके दिखाऊंगी, आप वहाँ पे साथ के साथ हैंड्स ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई जस्ट वांट टू नो how many of you are practicing SQL through MS SQL Server? No one? मैम इन पास्ट आई वर्कड ऑन MS SQL सर्वर. Then okay, you can practice on any platform. That is not an issue, but you need to practice. Otherwise, things will go, concepts will go. After some time, when you again try to refresh them, it will be like मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ये सब. Yeah, ma'am. And one more thing that I wanted to highlight that uh, when I was working on MS SQL Server, at that time, the DSA topics were very much in demand, database administration topics, and those topics It were is DB. One second. DBA, 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 DBA हाँ हाँ. topics were very much in demand, and at that time, uh, uh, learning those topics were a little difficult and challenging. So if you can throw some, if you have any materials or if you have some kind of a But no, direction towards that. I Yeah, just want to make it clear. We can have DBA topics here, but this course is basically for data yeah, I do analytics. understand. Yeah, I do understand that. But to enhance our queries, we do use such topics, right? But if we go to the DBA side right now, Uh, after completing SQL, others will suffer because they just want to, like, we can't take PBI. We yeah, I can't take understand. I Power totally BI, understand and right? totally agree with you.
The only thing is, if you have any reading materials or a study material, if you can share that in my spare time, I can just go through. Let me check on that. Okay, let Okay, me check. thanks a lot. चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सीक्वल के अभी एक दो टॉपिक्स और बच रहे हैं, उन्हें कंप्लीट करके फिर पीबीआई पे जंप करेंगे। ठीक है। Okay, so my screen is visible or not? Visible, right? Okay, so today now we need to discuss about the stored procedures and functions in SQL. Okay, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं सीक्वल में, लाइक एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, और भी बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे थे। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन से पहले हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। A stored procedure is a saved SQL script that you can execute repeatedly. It may contain logic like if, while, and can accept इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। तो जो हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं ना, वही ये सब यहाँ पे हम लोग फंक्शंस और स्टोर्ड प्रोसीजर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉजिक लिख सकते हैं हम, इफ वाइल, इफ एल्स लॉजिक लिख सकते हैं, लूप्स लिख सकते हैं लाइक वाइल एंड whatever loops you have learned in programming, so you can write here by using stored procedures, okay, in SQL। तो अभी इसके stored procedures के जो key features होते हैं वो देख लेते हैं। So it accepts parameter, जो हमारे functions भी accept करते हैं, fine। Then it supports complex logics like loops and conditions। It can modify data। तो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हमने देखा था कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो सीक्वल का एक वो टाइप है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। तो उसमें क्या चीज आ जाएगी, अगर हमें डेटा को मॉडिफाई करना है तो हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ऑल्टर भी इसका पार्ट है क्या? Can we modify the data using alter statement in SQL? Who is going to answer this? Should I call out the name? Okay, Ishita, can you answer this please? Ishita, are you there? No answer. Okay, I just want to know, can we use alter statement to modify the data in SQL? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. To modify the data, we only use insert, update, and delete. Okay. If we want to modify the tabular structure, then we need to use alter. Fine. Okay. Are you getting? Yes, yes. Yes, exactly. To
तो हमें अगर डेटा को मॉडिफाई करना है तो फिर हम इंसर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इंसर्ट से क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट से क्या होगा, डेटा अपडेट हो जाएगा, मतलब कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है, हमारी सेल्स में जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो जाएंगी, तो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। और डिलीट से हमारा डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन ऑल्टर से क्या होता है, ऑल्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें टेबुलर स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मतलब एक नया कॉलम ऐड करना है या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है। तो ऑल्टर जो है वो कब यूज होता है, ऑल्टर डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं होता, ये टेबुलर स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज होता है। फाइन, ओके। नाउ फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर्स इट कैन नॉट बी यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर हम बात करें स्टोर्ड प्रोसीजर्स की तो हम उसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट में स्टोर्ड प्रोसीजर्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखने वाले हैं, वो जाके स्टोर हो जाएगा और फिर हम जब चाहें उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले उसके लिए एक टेबल बनाना है, एम्प्लॉयज टेबल, सेम एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, और फिर उसके अंदर हम लोग 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं। फिर जो स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे वो कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बना दिए, ओके, और उसमें रोज भी इंसर्ट कर दिए। अभी मैं एक स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे बना रही हूँ विद द सिंटेक्स क्रिएट प्रोसीजर, okay, get employees by department. So my procedure name is get employees by department. This is the name of the stored procedure I am using. तो अभी मैं क्या चाह रही हूँ, ये जो मेरा stored procedure है ये क्या करे, मैं इसे डिपार्टमेंट आईडी दूं या डिपार्टमेंट नेम देती हूँ, क्योंकि मेरी एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट नेम एक कॉलम है, तो डिपार्टमेंट नेम मैं इसे दूंगी और वो मुझे एम्प्लॉयज सर्च करके सेलेक्ट करके ला के देगा, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, क्रिएट प्रोसीजर get employees by department, and then I am declaring a variable here at the rate department with the varchar 50 as begin select employee name salary from employees where the department equals to at the rate DEPT. So this procedure is going to take one input parameter at the rate DEPT, okay, that is basically the department I am going to use in my query, right? So this stored procedure I create here, एंड देन अभी मैंने स्टोर प्रोसीजर को सिर्फ क्रिएट किया है, अब मैं अगर उसका यूज करना चाहती हूँ तो मुझे वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेम थिंग हम फंक्शंस में करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग में फंक्शंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं और जब फिर हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसे कॉल करते हैं, उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेप 3 इज टू एग्जीक्यूट द स्टोर प्रोसीजर। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो exec, just to execute the stored procedure we write this keyword exec and the name of the stored procedure, okay, get employees by department. In this case we have the name as get employees by department, and then I am giving one parameter here, that is the input parameter at the rate department equals to IT. So this, if I execute this line, okay, so what it will do, it will give me the employee names and salary from the employees table where the department equals to IT, okay. So this line, when I execute it, it goes to my stored procedure get employees by department with this parameter IT, and it will find the name of the employee names, the name of the employees and the salary from the employee tables where the department is IT. Fine. Okay. So we have got the names of the employees where the with the salary where the department is IT. Okay. Any confusion or any doubt in stored procedures? This is a very simple example, so you can understand it easily. Okay. You can't get confused in the syntax, okay. So here we are declaring the variables also and giving the name of the procedure by using the create statement, and then afterwards in between begin and end I am using one query, okay. तो मेरा स्टोर प्रोसीजर का क्या काम है वो मैं बिगिन और एंड के बीच में यहाँ पे लिखूंगी कि ये स्टोर प्रोसीजर क्या ला के देगा मुझे, वो चीज मुझे बिगिन और एंड के बीच में लिखना है, ओके। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।
Ma'am, if we get some error while executing this select statement, at that time, what will be the output of the It create will give procedure you of? the error in the messages. Okay. 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 Yeah. In So we result, will get an you error will, and not the result, right? yes. If you write the query incorrectly, how it will execute, right? It will give us error. Okay. Fine. Any other question? No. Okay. ठीक है. Let's go further. So now stored procedures सब हमने समझ लिए हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और उनका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी देख लिया. ठीक है. चलिए अब देख लेते हैं एक बार फंक्शन के बारे में. अ फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू जिसे हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं. अगर किसी फंक्शन ने एक सिंगल वैल्यू रिटर्न की है तो हम उसे स्केलर फंक्शन बोलेंगे. अगर उसने टेबल रिटर्न किया है तो दैट इज कॉल्ड अ टेबल वैल्यूड फंक्शन. अब फंक्शन क्या होता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को सबको पता है, आप लोग पहले ही पाइथन वगैरह पढ़कर आ रहे हैं. ठीक है. तो स्केलर फंक्शन और टेबल वैल्यूड फंक्शन दो तरीके के फंक्शन होते हैं यहाँ पे हमारे पास. इट्स ऑफन यूज्ड इन सेलेक्ट. अब देखिए स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हम सेलेक्ट में यूज नहीं कर सकते थे. ठीक है. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ओके. एंड वेयर एंड ज्वाइन क्लॉजेस. अब इसके की फीचर्स एक बार देख लेते हैं. इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू. फंक्शन जो होगा वो हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा. आइदर इट विल बी अ स्केलर फंक्शन और इट विल बी अ table valued function. So it will return either a single value or it will return either a table. Okay, whole table, right? And it cannot modify the data. Okay, a function cannot modify the data. तो हम इसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट. ओके. इट इज यूजफुल फॉर एनकैप्सुलेटिंग लॉजिक और कैलकुलेशंस. फाइन. नाउ स्केलर फंक्शन टू कैलकुलेट एनुअल सैलरी. कि अभी मुझे क्या करना है, एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है हमारे एम्प्लॉयज की. ठीक है. तो एम्प्लॉयज टेबल हम ऊपर बना ही चुके हैं और हमारे पास उसमें सैलरी दी हुई है. फाइन. तो अभी जो सैलरी है वो मंथ वाइज प्रेजेंट है. ठीक है. लेट मी शो यू द एम्प्लॉयज टेबल. So this salary is month wise. Fine. So what I want here, I want the monthly, I want the yearly salary. Okay. Get the annual salary of the employees. Fine. So I write a function with the syntax create function. Okay. In stored procedures we use create procedures. Okay. Now here I am using create function. Get annual salary and then I am giving here one parameter. Okay. At the rate monthly salary int. Okay. And it will return int as begin. And what this function will do, ये क्या करेगा फंक्शन, ये हमें रिटर्न करेगा मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 टू गेट द एनुअल सैलरी. ओके. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, अ फंक्शन विल बी क्रिएटेड and then I am using this function in the next SQL query. Select employee name, get the annual salary. This get annual salary is my function name, and afterwards here it is one parameter at the rate monthly salary. So here I am giving the parameter as salary. Fine. As annual salary, this will be the alias in the table. Okay, in the resultant table for the new column that will give us the annual salary of all the employees, right, from the employees. Okay. So when I create this function, okay, so my command runs successfully, right? And then in this select statement I am getting employee names and the annual salary of these employees. ठीक है. तो ये इस function को कॉल करेगा. Okay. So can you tell me about this function, whether it is a scalar function or a table value function?
You people don't find this class interesting? It is a scalar function because it is returning the values for each row. Fine. Okay. So what it is returning here, at the rate monthly salary multiplied by 12. Fine. Okay. Okay. Okay, so you can see when I am calling this function in the SQL statement, it is showing me scalar valued function. Okay, because it is returning one integer value. Fine, and that integer value is the monthly salary. Let's go further. Okay. So it is an example of a scalar function in SQL. Let us see one inline table valued function. So this time I am creating one function which is giving me some which is returning some resultant table based upon the departments I am giving here in the function. So I am creating one function by the syntax create function get IT employees. Okay, and it will return a table to me, returns table as written, and then in parenthesis select star from employees where department equals to IT. So this statement will return a resultant table, right? So now this time this function is called inline table valued function because it is returning a resultant table. Okay, so let me create this function and then I will call this to get the information of employees from the IT department. So this is the query I am using here. Fine. So here I am getting the information of employees with the department IT. Okay, by using this get IT employees function, I am calling here in this query. Select star from dbo dot get IT employees. This time I am not using the employees table. I am using this function, and what this function will do, it will give us me the result according to this query that is written in its written after its written keyword. Okay. Ma'am, can you please explain this difference between the scalar function and the tabular function? I'm a little bit confused. Okay. So scalar function is basically returning only one value. Okay, so can you see this get annual salary function, get annual salary? Okay, so what it returns, it returns int. Okay, only Okay. one value. Okay, one Okay. integer at a time, correct? Right. Okay, and then in its between its begin and end clause, what I am returning here, one integer value, that is monthly salary multiplied by 12, right? Hmm. So it is giving me one single value, Hmm. right? At a time, one single value I am getting, correct? So Right. it is a scalar function. Fine. Now let's see the table valued functions again. So in this function get IT employees, what I will get, I will get the resultant table that contains all the information of the employees like employee ID, employee name, department, salary with the department ID, right? So this time I am getting a table from my function. Okay, so you can see for this get IT employees, what it returns a table. Okay, so in the syntax itself Acha. I am Okay. Okay. mentioning table here, right? Okay. Okay. As written. Now you can see in the written statement within the parenthesis, what is it returning? It is returning one table. Okay, one So, so, data set. so what I understood is if there is a return statement and return statement is specifically with the table, then it is a tabular function, and if it is returning any kind of a variable, then it is a scalar function. If it is returning one single value, Huh. then scalar function. If it is returning one table or a complete data,
Hmm. It is called a table value function. So like ma'am, here in this table function, if I write a particular, let's say, select employee name from employee where department ID equal to IT. So it will only give me a one particular variable like employee name, right? So is it No, this is not variable. Okay, this is not variable. This is a table which contains only field one name, column. right? Yeah, it's a So table which contains only one column. Then it will be a table itself. table itself, okay, it will not be counted as scalar. Yes, yes. Okay, fine. Fine. Okay, getting. जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है ना वो हमें एक टेबुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. तो जहाँ पे भी हम सेलेक्ट लिखते हैं उसका रिजल्ट एक रिलेशन ही आता है, एक डेटा सेट ही आता है, एक टेबल ही आती है. मैम इसका एक्चुअल यूज क्या है, मतलब व्हाई सच काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन इज क्रिएटेड? किसका यूज? दिस मतलब ये इन जो, वैल्यूड टेबल वैल्यूड एंड स्केलर फंक्शंस, राइट? हाँ हाँ, तो इनका मतलब ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन क्यों क्रिएट करके रखे हैं, जबकि इट इज जस्ट अ रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग जो कुछ भी डालेंगे वो आ रहा है, राइट? लाइक So रिटर्न we में हम have लोग, given it a name only. Okay, so we have given it a name. They both are returning something, right? हाँ They both हाँ, are functions, but one is returning single value, then it is called as a scalar. Okay, and if it is returning a data set, then it is called a table value. So we can see the difference. So we have named them ओके, accordingly. गॉट Just इट. this. Fine. Okay, now we are okay. Any other doubt from your side? Any one of you can ask. या तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर सब कुछ समझ में आ जा रहा है. ओके, सो आई एम एज्यूमिंग सब कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. पूछना है किसी को कुछ और? नो. ओके, नाउ लेट्स सी some key differences between stored procedures and functions in SQL Server. So if we see the purpose of stored procedures, it performs a set of operations, data manipulation and logic. Like we need to modify the data through insert, update, delete. Okay, not alter. Fine. Okay, and then for functions, it returns a single value or a table used in queries. अगर हमें कोई set of operation perform करना है तो हम stored procedure का use करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई single value return करवानी है या फिर पूरा पूरा एक टेबल रिटर्न करवाना है जो हमें आगे क्वेरीज में मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो फिर हम फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, अगर रिटर्न टाइप की बात करें तो स्टोर्ड प्रोसीजर जो होता है इट में रिटर्न 0, 1 और मल्टीपल रिजल्ट सेट्स. ओके, बट if we talk about a function, it must return a value. Either this value be a scalar or a table. Okay, if it is a scalar, then scalar value, and if it is a table, then table value functions. Fine. Now see the uses in SQL. Okay, cannot be used directly in a select statement. It is for the stored procedures. Okay. Okay, so if we are writing one query while using a select statement, we can't write some stored procedure directly in a select statement. Okay, then afterwards for functions, they can be used inside select, where or join. Fine. So these are the differences between stored procedures and functions. अगर compilation की बात करें तो जो हमारे stored procedures होते हैं, they compiled once and reused. वो एक ही बार कंपाइल होगा और फिर हम जब उसे रीयूज करेंगे तो वो दोबारा कंपाइल नहीं होगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो हम बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन कंपाइल वो एक ही बार होगा. ठीक है, कंपाइल का मतलब आप सबको पता है ना. ठीक है, कंपाइल्ड एवरी टाइम. ओके,
जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तब वो कंपाइल होगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं. फाइन. स्टोर प्रोसीजर एक ही बार कंपाइल होता है. ओके. नाउ ओके, that's it for stored procedures and functions. Any doubt in this you can ask, otherwise I will move to the next topic, that is the last topic for SQL, and then we will jump to Power BI. Ma'am, can you throw a little bit of knowledge on the store procedures execution? Like, is there any special memory allocation, or is there any special treatment given while executing store procedure? Or is it like the same like how we store the table in the data set database? It is like same, the store procedure also store their data, or how it is? Stored procedures are stored in the memory, then only we can compile and use them, right? So They physical will be database, stored later. okay, so physical database doesn't have a store procedure, something like that. Physical database, what do you mean by physical I database? mean, this particular object will be there in the database, right? The store procedure what we created, or the function what we created, Hmm. that will be Yes, stored in the database, right? In the database schema, yes, right? yes, correct, correct. So it is having a disk space there, right? Hmm. Okay, but when it gets executed, at that time, whatever the result comes, that result will be added back to this space, or it is a temporary allocation. Like when I execute a select star from employee, at that time the result will be whatever the result will be there. It is a temporary allocation, right? That whatever Hmm. query results we get, it is a temporary Yes, allocation. So likewise, yes, store procedure ka allocation is also a temporary allocation, or yes, yes, right. Temporary. okay, okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am, it's visible. Okay, so as you can see at my screen, we are now going to study about the temporary tables and views in SQL Server, along with their description, uses and examples of how to create and insert data into them. Okay, so temporary tables, as the name implies, it is a temporary table, and there are two types of temporary tables: local temporary table and global temporary table. Okay, तो अभी local temporary table क्या होता है इसे देख लेते हैं. Okay, this table is a table that is created and existed only for the duration of a session or a stored procedure. Fine. It is prefixed with a single hash. Okay. तो ये जो टेम्पररी टेबल होता है इसे हम क्रिएट करते हैं तो ये तभी के लिए एग्जिस्ट करता है जब हमारा सेशन चल रहा है उस क्वेरी का. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन और अ स्टोर्ड प्रोसीजर. और इसको जब हम सिंटेक्स लिखते हैं ऐसे क्रिएट करने का तो सिंगल हैश इसमें यूज किया जाता है. फाइन. Then what is its use? Useful for storing intermediate results that are only needed temporarily within a session or a stored procedure. Okay, so here I am creating a local temporary table. You can see the syntax here: create table hash temp local table. Okay, so this temp local table is the name of my table, and I am using one hash in front of it to make it a local temporary table. ठीक है, मैंने तो लिख दिया टेम्प लोकल टेबल, मुझे पता है कि ये टेम्पररी टेबल है, लेकिन SQL सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इसे एक टेम्पररी टेबल के तरह से ट्रीट करना है. ठीक है, तो we use is we use one hash before it. Okay, then when I create this, okay, and now I need to insert some data into it. Fine, and we can
Similarly, like other tables, we can fetch the data from it. Okay. बस हमें ये याद रखना है कि ये लोकल टेबल है, ठीक है, तो लोकल रिजल्ट्स इसमें होंगे और ये टेम्परेरी है, ये एक सेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही हम यूज कर सकते हैं। हमारा सेशन क्लोज हो गया तो फिर इसका हम यूज नहीं कर सकते। ओके फाइन। और इसको क्रिएट करने के लिए सेम टेबल वाला ही फॉर्मेट, वही वाला सिंटेक्स यूज करना है और उसी के थ्रू हम डेटा, उसी के जैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और क्वेरी भी उसी के जैसे लिख सकते हैं जैसा नॉर्मल टेबल के साथ होता है, बस एक हैश का यूज करना है इसके नाम से पहले। ओके गॉट इट। Now move to the global temporary table. So a global temporary table is a table that is available to all sessions and and is prefixed with double hash. It exists until the last session. Using it is closed. ठीक है, तो अभी ये वाली जो टेबल है ये भी टेम्पररी ही होगी, लेकिन क्योंकि हमने इसे ग्लोबल डिफाइन किया है, इसके नाम के आगे 2 हैश लगाए हैं, तो ये हम मल्टीपल सेशंस के अक्रॉस यूज कर सकते हैं। ओके so it is useful for sharing temporary data across multiple sessions. okay और इसका जो लाइफ टाइम होता है ये तब तक रहता है जब तक जो लास्ट सेशन इसे यूज कर रहा है उसे हम क्लोज नहीं कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन क्रिएट दिस ग्लोबल टेम्पररी टेबल बाय यूजिंग द सेम सिंटेक्स, जस्ट वी नीड टू add a double hash before its name. okay right, and then we can in the similar way we work with other tables, we can insert the data and we can select the data from it, right? Okay, any doubt in this? Where this global temporary table is used? मल्टीपल सेशंस के लिए अगर हमें कुछ ग्लोबल डेटा चाहिए लेकिन टेम्परेरीली ही उसे यूज करना है, ठीक है, और फिर जब हमारे सेशंस क्लोज हो जाए तो वो टेबल वहां से डिलीट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ग्लोबल टेम्परेरी टेबल का यूज करेंगे। ओके, ये सेशन वाली चीज सबको समझ आ गई? वही पूछने वाला था मैम, एक्चुअली सेशन कब खत्म होता है ये, और कैसे खत्म होता है? ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे मतलब आपको किसके रिस्पेक्ट में समझना है, लोकल टेबल या टेम्पररी टेबल? मतलब मल्टीपल सेशंस के लिए टेम्पररी टेबल का यूज, ग्लोबल टेबल का यूज होता है, और सिर्फ एक ही सेशन में आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लोकल टेबल का यूज कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा सेशन क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ कि लोकल टेबल्स का स्कोप वहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, ओके ओके तो हमारे यहाँ पे ये जो टेबल थी टैम्प लोकल टेबल, इस थ्योरी को मैं यहाँ एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी कर लेती हूँ इस थ्योरी को, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन न्यू सेशन, ओके ओके, this stamp local table, so it is working here. If I am selecting something from this table, it is working here in my session where it is created, right? Now I am going to one more session here, let's see will it work or not. Okay, so it is saying this is an invalid object hash stamp local table because its scope is not present here, right? राइट, The session has changed, तो ये यस, सिर्फ वहीं पे work करेगा जहाँ पे क्रिएट हुआ है उसी सेशन में। okay ओके now ओके let's see an example of global temporary tables. तो हमारी जो global temporary table हमने बनाई उसका नाम था double hash stamp global tables, right? So within the same session, let me execute this query. Okay, and then I am copying it and I just need to paste it here in a different session, right? So this time I am using this stamp global table in a different session where it is not created. Okay, so the session has been changed. So you can see that this global temporary table is working here also. But in the case of temporary local table, it is showing us invalid object. या राइट, अंडरस्टूड मैम।
Okay, so any other query from your side? मैम ये स्कीमा में कहाँ पे बनता है मैम? ये किस स्कीमा में ये टेम्प ग्लोबल टेबल बनेगा? मतलब जो ग्लोबल टेबल टेम्पररी ग्लोबल टेबल है वो, और जो लोकल है वो? वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैंने भी नहीं देखा है कहाँ पे बनेगा। इनका सेशन के बीच में जो इनका लाइफ टाइम रहता है वो सिर्फ तभी के लिए है, तो आई थिंक वी कांट सी देम फ्रॉम हियर, फ्रॉम आवर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर। सिस्टम टेबल्स में भी नहीं रहेगा मैम? कहाँ पर? सिस्टम टेबल्स? नो, दे आर नॉट सिस्टम टेबल्स अच्छा अच्छा, बेसिकली, ओके। दे आर नॉट सिस्टम टेबल्स। We can see the views in the views, but I can think of that we can't see them from Object Explorer because they are temporary. ओके। Fine, let's continue. हाँ, अभी व्यू की बात कर लेते हैं। आपने सबने सुना होगा कि सीक्वल में एक व्यू होता है, व्यू से क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो टेबल का कुछ पार्ट या फिर टेबल पूरा का पूरा सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसा नेम बोल रहा है ना, उसका नाम जैसा है व्यू, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज इट इज अ टेम्पररी व्यू। ओके, a temporary view is not a standard feature in SQL Server, but you can create a view that is used temporarily within a session. तो जैसे टेम्पररी लोकल टेबल्स होती है ना, सिर्फ उसी सेशन में उनका यूज कर सकते हैं, ऐसे व्यूज के साथ भी यही केस है, सिर्फ एक ही सेशन के लिए उनका लाइफ टाइम एग्जिस्ट करता है। दिस व्यू कैन बी ड्रॉप्ड आफ्टर यूज, ठीक है, तो यूज के बाद हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ रीयूजेबल क्वेरी, इसका हम यूज कब करते हैं, व्हेन वी वांट टू रीयूज समथिंग, okay, that can be referenced multiple times within a session। एक सेशन में मल्टीपल टाइम हम उसे रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉयज टेबल बना रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट as the columns we are having। Then we are inserting data into this employees table, and then we are creating some temporary view, okay, and in this view temp employees view, see the syntax here, create view, okay. This is very easy. If you want to create index, right, create index, then index name, okay. If you want to create a view, right, create view. If you want to create a stored procedure, right, create procedure. If you want to create a function, right, create function, okay. So the syntax is very easy at some places, but it is complex at some of the places in case of pivot and pivot, okay, that we have discussed yesterday, right. So here in this view, we are selecting employee ID, first name, last name from employees where the department equals to ID. So this view will be created when I create this temporary view here, and we can see the data, okay. So when I execute this create view, na, only view will be created. But if I want to see the data, then I used to select from it, okay. So select star from temp employees view, it will give us the data that this view will return, okay. Get it? Fine. This is not a table, this is only a view of a table, okay. some data set का view होता है ये, रियल में टेबल नहीं होता है, okay. So let's create this employee table. Now with this query, we will create a view here, okay, but you can see there is no data set present in the results of the query. If I want to see the data that is present in this view, then I need to use select.
So from IT department, we get this. Okay. So this employee ID 2, first name Jen and last name Smith. It is coming from IT department of our view, right? We can drop this view by using the drop statement. Okay. So if again when I select from the view, it will not show us the data. Right? It is showing us invalid object name temp employee view, right? मैम जैसे अल्टर टेबल टेबल नेम रहता है वैसे ये व्यूज को भी हम लोग अल्टर कर सकते हैं अल्टर व्यू व्यू नेम यस आई थिंक कर सकते हैं मैंने कभी नहीं किया व्यूज का इतना ज़्यादा एडवांस कि मुझे व्यू बनाना है एनालिटिक्स के लिए ये वाला यूज केस आई haven't considered in any case but if you want to you can search for it okay right okay now can we move to Power BI Sure, ma'am. So I just want to know about how you people find SQL. Is it interesting? Is it boring? Is it difficult to understand? The syntax is complex. There are too many things. What are your views? I'm yet to decide the concepts which I have learned in DSA. That concept how SQL will handle and what is the use of learning SQL with respect to DSA. So like data structure and algorithms, what we have learned, those are all algorithms which get created and the optimizing of those algorithms. And here we have learned how to store the data, but it is already optimized by Microsoft SQL Server. So what are the what are the benefit out of this learning SQL with So you respect to people are DSA? enrolled to DSA course or Huh. you people are enrolled to data analytics course? No, data analytics I totally understand, but the concept is something that I need to connect it. Like अगर मैंने डीएसए पढ़ा है और डीएसए में मैंने बहुत सारे अल्गोरिदम्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो वो सारे अल्गोरिदम्स के स्ट्रक्चर में से हार्डली एक या दो अल्गोरिदम स्ट्रक्चर में एसक्यूएल में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बाकी के लाइक लिंक लिस्ट है और कुछ स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ पे एसक्यूएल में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ वो मुझे देखना है अल्टीमेटली हम लोग ने वहां पे ये पढ़ा था कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग डेटा जब स्टोर करते हैं तो ऑप्टिमम तरीके से कैसे करें तो ताकि उसका रिट्राइवल जो है वो आसान हो जाए अगर एसक्यूएल में मैं ऑलरेडी सब कुछ सेट है मुझे कुछ करना ही नहीं है और वो ऑप्टिमम ही है तो मैक्सिमम मैं एक एसक्यूएल क्वेरी प्लान लगा के देख सकता हूँ कि मेरी क्वेरी जो है वो ऑप्टिमम है कि नहीं बट आई कैन नॉट चेंज हाउ द स्टोरेज एसक्यूएल डज राइट सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये कनेक्ट कैसे होगा राइट डीएसए और एसक्यूएल ये Say, दोनों को कनेक्ट कैसे करेगा DSA is basically used in case of programming. Okay. राइट So if you are doing data analytics through Python, then it will be useful. Okay. But if या you are doing data analytics through SQL and Power BI or Excel, then there is minimum use, or I can say there is no use of DSC. But if you learn this, you know this, then it is good to have. ओके but I found SQL very helpful and very structured thing. So whatever data we have received, we can process it through a proper channel. टेबल्स बनाओ उसके अंदर वो डेटा जो है वो सारा का सारा डेटा डाल दो प्राइमरी की और फॉरेन की सेट कर दो रिलेशनशिप्स बनाओ एंड देन यू आर गुड टू गो विथ योर डेटा एनालिटिक्स स्किल्स Yes. So it's easy, right? या इट्स इजी इट इज मोर स्ट्रक्चर देन लाइक हाँ ठीक है मेरे पास बहुत सारा अनस्ट्रक्चर डेटा आता रहता है बट वो अनस्ट्रक्चर डेटा को मुझे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का ये एक प्रॉपर टूल है दैट्स व्हाट आई फील Great. Any other person who wants to say something?
हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। मैम मुझे ये सवाल कंटिन्यू करना था, जैसे अभी कहा इन्होंने। तो जैसे दो रोल हैं, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिटिक्स। तो क्या डेटा इंजीनियर के रोल पे भी ये डीबीए या कुछ ऐसा यूज होता है, या कुछ अदर टूल यूज होता है? हाँ, ये भी यूज होता है और अदर्स भी यूज होते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, और मोस्टली प्रोग्रामिंग टाइप स्क्रिप्ट और इसमें होता है हमारा नोड जेएस वगैरह में। ठीक है। सो डेटा इंजीनियरिंग इज बेसिकली giving the data, prepare the data for data analytics. Okay. So creating the pipelines for data analytics. ओके। ये मेन मेनली कि मतलब कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना अदर डेटाबेसेस से, या फिर हमारा डेटा जो आएगा। हाँ, तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको जो डेटा चाहिए वो कहाँ पर है, ठीक है, और उस डेटा वहां पर वो कहाँ से आ रहा है, वो एक पाइपलाइन सेट करना। ठीक है, टू मेक द डेटा अवेलेबल फॉर एनालिसिस। ओके, सो ये डेटा इंजीनियर्स का रोल होता है। अब मैं मशीन लर्निंग का भी इसी का वो पार्ट है एक जिसमें। एडवांस नहीं, वो एक एडवांस कंसेप्ट है। उसके लिए मशीन लर्निंग बेसिकली डेटा साइंस का पार्ट है। डेटा साइंटिस्ट यूज इट, ओके, टू क्रिएट द मॉडल्स। Okay, so when you learn about all these things for data analytics, data engineering, then afterwards you can go for data science also. Okay, for artificial intelligence, machine learning, deep learning, these all concepts are coming in data science. Okay, so you can ओके। create some models, you can create some algorithms to do something automatically by the use of AI. Right? ओके मैम, थैंक। Fine. Any other person? Okay, okay. Then we can start this Power BI. Fine. And after Power BI, we will take Excel. Excel will not take much time because you people already know about this. And you have already used Excel, okay, in some way or the other. तो डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल का यूज कैसे होता है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेल में। बाकी पावर बीआई में हमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। सीक्वल के कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो फिर पावर बीआई समझने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ इंटरफेस को देख के कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वल में तो हमें हमेशा एक क्वेरी लिखनी है, कुछ भी ऑपरेशन कराना है। ठीक है, तो हमें उसका सिंटेक्स याद रखना है, उसमें कैसे क्वेरी लिखी जाती है वो सब याद रखना है, किसका क्या यूज है वो सब याद रखना है। पावर बीआई में आप इंटरफेस देख के ही समझ जाओगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, now is my screen visible? Yes, ma'am, it's visible. Visible. Okay. So you can see one dashboard at my screen that I created in Power BI. Okay. So you can see some charts, one pie chart, one donut chart, one column chart, two bar charts, right? One map chart and some slices. Correct? Fine. So when I click on some another year, the data changes, right? So it is an interactive dashboard that is present over my screen. Okay. If I select one customer name from this chart, okay,
So my data only shows some values that are present for this customer. Okay, if I select some another customer here, then the data changes. Okay, and it will show me the data for this respective customer. Customer name Raymond. Okay, correct. Okay, let me select the year here. Fine. Okay. Now so the first step in Power BI is to get the data. ठीक है, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम चार्ट्स नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो डेटा को लाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पावर बीआई में. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन आप मेरे सिस्टम पर देख रहे हैं ना अभी, ये पावर बीआई डेस्कटॉप एक ऐप है, वो आप भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा. ठीक है, तो आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं साथ के साथ जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं. ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने सीक्वल की तरह मतलब सीक्वल के टाइम पे किया, आपने सिर्फ उसे देखा और बाद में प्रैक्टिस किया, तो वैसा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पावर बीआई में हाउ टू इम्पोर्ट द डेटा इन पावर बीआई. Okay, so we have an option here, get data, and we have some common data sources. We can import data in Power BI from multiple sources. There are many sources present, okay, like Excel workbook, Power BI semantic models, data flows, data words, SQL server is also present here. Fine, text, CSV, and many others. Okay, when I click on more, you can get other options as well. Okay, so you can see how many options are present, right? Many. We can't count them. Right? मैम जेसन से भी ले सकते हैं ना, जेसन फॉर्मेट से भी. हाँ, देखिए आप भी 4th नंबर पे जेसन बता रहे हैं. या ठीक है, एग्जैक्टली. या ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं. वी कैन इंपोर्ट द डेटा. इफ यू यूज माई SQL database, then you need to select this. Okay, if you people are very much interested in PostgreSQL, then there is option for Postgre also. Okay, so here you can see this as your database for PostgreSQL. Okay, fine. तो आप कहीं से भी कनेक्ट करके डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं. और फिर जब डेटा एक बार हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं. फाइन, ठीक है. तो देखिए एक बार जब हम डेटा को वहां से गेट करेंगे तो ये जो डेटा वाला पेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा. सो यू कैन सी right now I am having some tables that are present in my data frame. Okay, so date table is present, orders, people, and return. So I have some data of one supermarket, right? So in a supermarket, whatever data I am having, it contains orders table, or we can say orders query. Okay, and I imported it through Excel. Okay, and some data for people. Okay, some data for returns. Okay, and some data for orders also. Okay, fine. तो आप देखिए अभी ऑर्डर्स के लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स प्रेजेंट हैं. डिलीवरी डेज, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, डिस्काउंट, मार्केट, ऑर्डर डेट, मैनी अदर्स आल्सो लाइक सेगमेंट, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा ऑर्डर्स टेबल में प्रेजेंट है, राइट? Then for people we have person and reason. So which reason a person belongs to. मैम ये समेशन साइन जो है वो न्यूमेरिक डेटा है और नॉन समेशन साइन जो है वो कैरेक्टर डेटा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, समेशन साइन का यहाँ पे मतलब है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन, ओके. हाँ, ठीक है. जैसे मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एग्रीगेशन देख सकती हूँ. ओके, फाइन. लाइक अगर आपको किसी फील्ड के ऊपर सम लगाना है या फिर मैक्सिमम मिनिमम ये सब लगाना है, फाइन, एवरेज लगाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए. मतलब ये पूरे कॉलम का सम है क्या मैम ये?
हाँ सम भी हो सकता है और मिनिमम मैक्सिमम whatever I can use here. Okay, so ओके these are called implicit measures. पावर पे अभी हम आगे मेजर्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी दो टाइप के मेजर्स होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट वो मेजर्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, एंड इम्प्लिसिट मेजर्स आर दोस which Power BI ऑलरेडी प्रेजेंट. gives us. Yes, which Power BI ओके gives us by default. ओके मैम. Okay. Now you can see, let me show you how I created one chart that is present at the dashboard, and then we will actually start by importing data in the next class. Fine. Now, let me create one chart for you people. Like if I go with sales by market. So let's create this donut chart in a new page, and you see how I created it. So this is a new page. The dashboard that is present earlier, it comes in the different page. And then for page 1, let me go with one donut chart. So you can see one visualization pen here. 1 second, now give me 1 second. Okay, so we are going to create one chart here. So can you see this visualization pen at my screen? So you can see here there are multiple graphs and charts present, right? This is stacked bar chart. This is stacked column chart, clustered bar chart. Fine. Many are there. Clustered column chart. Similarly, one donut chart, one pie chart. So let's create one donut chart here. Okay. Let me make it bigger. Now go to the data pane, and I want market and values, okay, for my donut. Okay, so we have market in orders table, right? Okay, so we have market in the legend. I drag this market here in the legend of donut chart. Fine, and let's see. Okay, so I want sales by market. Okay, so for this donut chart, in the legend I put market and I want to see sales. Okay, here. So you can see sales by market donut chart at my screen. Fine. So whatever market it is, if I can take Asia Pacific, it is blue in color. So the values it's showing me 4.04 million. Are these values visible to you? Let me give one uh, bigger size to them. Let me increase the text size. Let me make them bold. Okay. Color is fine. So this formatting kind of thing we can do through format visuals. Okay. If I want to display the units, I can do like this. If I want to check this display values, like how many decimal values should be present. Okay, this time it is auto. Let me make it one only. Okay, so you can see only one value will be present for the data values that are present in the data set. Okay, let me make it auto again. Okay, so you can see there are two now, right? Are you people getting? Yes, ma'am. So some of you, I think, have already gone through Power BI earlier. How many of you? I have gone through Tableau, not Power BI. Okay. What about Power BI? Anyone in this class who has already worked upon or see the Power BI desktop? No, ma'am, I haven't gone through this. Okay, no worries. What you can do, you can install Power BI desktop at your system, and then we will do hands-on simultaneously while learning. Okay. Okay.
Ma'am, right now So you want now, us to install? no, not right now. For the next class, you will be prepared. Okay. No problem. मैम Mm-hmm. इसमें हम सैम्पल डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम पावर बीआई डाउनलोड किया है, तो उसमें सैम्पल डेटा ही शो हो रहा है, तो हम वो यूज करके साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? हाँ जरूरी तो हाँ, नहीं आप है हैंड्स आपका ऑन वाला ही करने के डेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप हैंड्स ऑन करने के लिए कोई भी डेटा यूज कीजिए, प्ले अराउंड कीजिए, एक्सप्लोर करिए चीजों को, तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाया, वैसे आप भी कुछ चार्ट जो डेटा पहले से उसमें प्रेजेंट है उससे बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है। यस। Is there anyone who has already worked upon Power BI? मैम मैं एक बार डाउनलोड करा था, थोड़ा बहुत यूज करा है। So you find it difficult? मैम सब इजी है, बस सीखने वाला जो पार्ट है वो जब हम क्वेरी एडिटर पे जाते हैं और डेक्स फॉर्मूला या न्यू फॉर्मूला मेजरमेंट लगाते हैं, बस वही वाला पार्ट है। ठीक है, हम वो भी सीखने वाले हैं, हम डेक्स के ऊपर भी वर्क करेंगे। इवन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेक्स से शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है। हाँ मैम, वही वाला पार्ट मुझे लगा जो एक मतलब ठीक है सीखने लायक। डू यू नो एक्सेल? हाँ मैम, एक्सेल वगैरह सीखा है, बाकी वीबीए मैक्रो फंक्शंस तो बस यूट्यूब पे अगर कुछ मिल गया इनबिल्ट तो वो यूज करके देख लिया अदर फॉर्मूला बनाने के लिए। ओके। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई और कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जिसने पावर बीआई यूज किया है? अगर आप लोगों को सीक्वल इजी लगा और समझ में आ गया है तो पावर बीआई बहुत आसान है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड सीक्वल टिपिकल टू अंडरस्टैंड आफ्टर द लेक्चर्स वी हैव कवर्ड? No one. So I can assume that you all know SQL very well, right? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Fine then. Ma'am, is there any test that you are conducting on SQL? Sorry, what are you Is there asking any? about? Yeah, I am asking. Is there any test that is getting conducted on SQL? Test. Am I supposed to conduct a test? No, I am just asking. I am not aware. No test will be there. You Okay. people are grown up persons. You can think of yourself, हाँ, कि अभी हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अगर कुछ सीखना है तो उसका प्रैक्टिस खुद से नहीं करना है, मैम, टेस्ट द की थिंग इज, जरूरत ऐसा लग। हाँ हाँ। जब भी डीएसए किया था ना तो उसके बाद एक टेस्ट था, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे ही टेस्ट हर एक टॉपिक में रहेगा क्या नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी सीक्वल का तो कोई अभी ऐसा टेस्ट नहीं है। अगर होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, फाइन। क्योंकि अभी ये डेटा एनालिटिक्स एक पूरा कोर्स है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है ना? राइट राइट राइट। तो ठीक है शायद मैम, हो सकता है जब पूरा डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई टेस्ट हो। ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम बताइए। ये जो डेटा का ऑप्शन था मैं इस पे गई थी, बट बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मेरे पास प्रीवियसली कोई डेटा है नहीं आज कैन सच यू तो। स्पीक
somewhat louder. I can't hear you properly. Is it better now? Yeah, tell me. मैंने आपको बताया ना, मैंने ये भी फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया, तो जो डेटा वाला ऑप्शन है ना इधर, इसमें मेरे पास कोई डेटा नहीं है। सो मैंने सोचा था कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि सैम्पल डेटा डाउनलोड करने के लिए, तो वो कैसे करूँ मैं नेविगेट उसमें? नहीं, मैं सैंपल समझ नहीं। डेटा उसमें नहीं होगा, ठीक है, आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वो तो सिर्फ मैं एक ऐप है। हाँ, वो सिर्फ एक ऐप है, विंडोज ऐप है, आपको उसके साथ डेटा नहीं मिलेगा। सैंपल डेटा या तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, फिर आप उसको सैंपल डेटा को डाउनलोड कर लीजिए और पावर बीआई डेस्कटॉप में इंपोर्ट कर लीजिए। उसे इंपोर्ट कैसे करना है पीबीआई डेस्कटॉप में, दैट आई विल टेल। ओके मैम, थैंक यू। Okay, so making a chart in Power BI is so easy that we have seen. Okay, now I will tell you where we write text. Okay, let's see one more example of creating a chart. Okay, so I will tell you about the filters also. Okay, let's create one chart on the same page itself. Okay. So as you can see, I created one chart, profit by segment. Okay, so it is a column chart and I put segment on the x-axis. Okay, so we have three segments present in our data, that is consumer, corporate and home office. Okay, so it is a data of a supermarket. So whatever customers we are having, we are segregating them in segments. Okay, so first segment is consumer, second is corporate, and the third is home office. Then I put profit on y-axis of this column chart. Okay, then I do some formatting so we can get the values from x-axis and y-axis in some bold and some bigger format. Okay, so you can see, as I have two different charts at this page, when I select the consumer column here, consumer bar, we can see say it as a bar in the bar chart, and if it is a column chart, then we can see it as a column. Okay, so when I select this consumer here, so you can see donut chart has changed, right? It is showing us the values and the colors that are highlighted that are present for consumer segment only. Okay, right? Okay, so let me select some, okay, market Europe here. Then
when I select the market Europe in this sales by market donut chart, this blue one, then what will happen? This chart will change. This will highlight only some parts, okay, where Europe market data will be visible in different segments, right? So let me select this one. You can see Europe market profit by the different segment are highlighted in this chart. Okay, so this is called the interactivity uh, between the charts in a dashboard, right? Okay, so if I select home office, then it will again show me only the highlighted part in the donut chart, correct? One more thing I want to show you. So there are two ways in Power BI where through which we can transform our data. Okay, so if we want to transform our data, either we go to the Power Query editor by right clicking on our data and then clicking this edit query option present over here. Okay, so here it is giving me some error. You can see the error is about that the source file from where the data is importing is not present right now at this path. Okay, so when we started learning about this is called Power Query editor in Power BI. Okay, so when we started learning how to transform uh, the data through Power Query editor, I will show you how to fix these errors. Okay, now you can see there are three queries that are present and there are some steps at the right? Okay, and this property's name is people. So this people is basically the name of the query that is selected over left hand side, right? Now I select orders, then it changes to orders here. And there are some steps that I have applied to transform the data. Fine. When I select returns, it is showing us returns here and the applied steps for the returns query. Okay, so this is the way we can go to the Power Query editor, right? Now let me cancel this and let's see the other way how we can transform our data. So one way is to use the Power Query editor that I have already shown you. Okay, and We are not able to see that Power Query window actually. We are able to just see the dashboard. is it the case? Okay, wait. Yes. Is it not visible? Yeah, it is not visible. Actually, only one tab is visible to us. Okay, then let me choose one another. Now, No, it is visible. so let me tell you again what I was telling. Okay, so you can see the left hand side there are three queries. These are only those queries that we have in the data pane of our Power BI desktop window, right? When I select people here, you can see the name in the properties as people and the applied steps for this particular query that I have applied to transform data to make the dashboard that you have seen already at my screen with different charts. Okay, so when I select returns, you can see that the name here is returns now. Okay, here. Okay, and then the applied step shows the steps that I have applied to transform the data for the returns query. But as you can see, there is some error present for all of the three tables. It is just because the data set from where I have imported to Power BI, though this data set is not present at the address that is shown here. Okay, because this dashboard I have created in at some another system, and now just to show you people, I take it over here and download it to show you the dashboard. Okay, so when I have the data set present in Excel also, then this error will not be there. Okay, I will show you how to resolve it in another class. Okay, so this window is called the Power Query editor. Fine, so we can write some functions here. We can write this thing that you can see, this function bar, formula bar. So this is basically
the formula bar where we write the AM language code in Power Query Editor to do the transformations of our data. What this language is called? AM language. Okay. So whatever written here is something called AM language. Okay. Fine. Let me minimize this and let me give you another method here. That one method is to transform data, one method is to go to the Power Query editor and do the transformations, right? And the second method is to write the text. Okay, so in my data set of supermarket, I only have three tables: orders, people, and return. Okay, I created explicitly this date table. Okay, so to create this table I use one dex formula. Okay, so you can see now here, you can see date table equals to, so this is called dex. Okay, whatever I write here to calculate something, to transform my data, to calculate the columns, to calculate the measures, whatever formula or function I will be writing here, this is called dex. Okay, so to create this table, I use one function called calendar that is present in DAX, and two dates I have used. So what this calendar function will do, it create one date table along with my data set which contains the dates between the first date and the last date. Okay, so here I am taking 2 years data from 1st of January 2020 to 31st of December 2021. Fine, so it will create this calendar function or text will create one date table for me. Okay, so it is just to show you that this thing that you can see at my screen that I am selecting right now, this formula bar is used to write text. Okay, okay, one more thing I to tell you, this I have I have told you about visuals, and this is for the format visual. When I select this visual, I can get to the visual and general tab, and then I can change the things that are present in my visual. Okay, like if I want to change the color of these columns, I need to go to the columns. Okay, and then I need to change. There are many other options available, but as we will be learning them, we can get an idea of. Okay, so if I want to make it a blue, then it will change the color, and we can also do some border kind of thing here. Okay, yes, now you can see with blue there is some border in pink for my columns. If you can't, if it is not visible to you, let me again change its width of the border. Yes, I can find it here. Okay, so width of the border is 9 now. Now you can see the border, right? Okay, so we can do these kind of things. Fine, for now I have changed this border to off, so it will not be visible. Okay, similarly like data labels, for now data labels are off for this chart. Let me on them, and then we can see some values that are present over the column. So this kind of formatting we can do in Power BI. Okay, now so if data labels, if we can change the orientation of data labels like vertical. Okay, and position will be like inside and outside, and then they will be above the bars, inside center, then they come to the center of the bars. Okay, inside base they come to the bottom of the bars, right? So it's easy, very easy. Whatever is written means that only. Okay, जो लिखा है उसका वही मतलब है. आपको जो करना है आप पढ़ के कर दीजिए, पहले से सीखने का भी कोई जरूरत नहीं है. ये फॉर्मेटिंग तो बहुत ही इजी होता है. ओके, ठीक है. चलिए अभी जैसे डेटा लेबल्स को मैं ऑफ कर देती हूँ. लेट्स सी द रिबन्स. Okay, so this is showing the ribbons. Okay, it will connect my columns with each other, right? Something like this. It's something like this we get when I put on the ribbons. Okay, if I want to
I want to slide my chart, so I can use this zoom slider. It will make my chart bigger. Okay, something like this. Okay, it is making my chart smaller. Fine. So many formatting options available. Okay, and in general, so it is like title of the chart, effects if I want to give, the visual border if I want to show. It is basically for the chart. Okay, general is for the whole chart. Okay, some shadow if I want to show in the chart. So you can see the changes that are happening in the visual part of the chart, right? Fine. So it's very easy. Okay, another thing I want to show you here, the filters. Okay, if I want to make some filtering part, like here the profit is selected by all, segment is selected all. I just want the segments only consumer here and corporate. I want to remove this home office, then I need to select here consumer and corporate. Okay, so I can't see the home office because I didn't select it, right? So this is the filter. So filters are basically of three types in Power BI. One is the visual level filters that I have already shown you here, filters on this visual. Then comes the filters on this page, this whole page. Okay, so whatever filter I will apply here now, this will apply for both of these charts. Okay, let me show you. Like if I pull market here and I just want to see Europe data. Okay, and if I select Europe, you can see the chart has changed. Okay, let me select Asia Pacific with Europe. Now see, the chart has changed. It is showing the data for Asia Pacific in Europe both, right? And let me include Africa also. You can see the values in the chart. Let me remove the Europe. Okay, so you can see both the charts are now changing based upon the filter. So filters on the page, the is like whatever charts data present on the page, it will uh, change them depending upon the filters, right? Now filters for all pages. Okay, if I put market here, right, and let me copy this and let me create one page, page 2. Okay, now you can see page 2. On page 2, you can see this filters on all pages. It contains market, but मैंने तो इसे सिर्फ पेज 1 पे लगाया था, but it will be applied to all the pages. ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला फिल्टर अभी के लिए हटाते हैं इसे समझने के लिए, और इसमें सेलेक्ट ऑल करते हैं. ठीक है, तो अभी ये सारे मार्केट का डेटा आपको दिखा रहा है. ठीक है, और पेज 2 में आप देखेंगे तो जो डोनट चार्ट है सेल्स बाय मार्केट, उसमें भी सारे मार्केट का डेटा आपका दिखा रहा है. ठीक है, अगर मैं पेज 2 पे जाती हूँ और इधर में मैं filters on all pages में let me select only Europe and Africa. Okay, so you can see on page 1 this change has happened. You can see only Africa and Europe. Okay, let me select now from page 1. I am selecting this Asia Pacific also. Now here 3 different parts of donuts will be visible. For page 2 you can see now there will be 3. Okay, see. So let me make the legend somewhat bigger so you can see the values. Okay, so the legend is on. And let me go to the text. So you can see here Asia Pacific, Europe and Africa. The key is shown here. Okay. Select one more. So you can see the 4 here. Okay. Latam is also present here in the market. So when I select Latam here, page 1 also changes for Latam. Right? You can see the 4 here. Okay. So it's easy, right? To make the visuals is easy, very easy. The important part is to learn DEX and Power Query, how to write the AM language code and how to write the DEX.
Okay, and when we learn about DAX and Power Query, we will learn about the calculated columns and calculated measures. Okay, and what is the basic difference between them, and various other DAX functions are present and how we can use them. What is the use of each and every function, how they work. Okay, right? Yes. So when I right click on this one part of donut chart, okay, I can show it as a new table, show it as a table also. Okay, when I click on show as a table, so it will give me a this information of donut chart will be present in a table format on the same page. It will be visible. Correct. Same thing. We can now we can go back to the report, so we can see the report here. Now, if I go with this chart and I show as a table, you can see this chart information will be present in the form of a table here. Now, when I go back to the report, then you can see I am back to my report. We can also change the orientation part of these two charts, like they are. I need to go to the properties for. Okay. So let me unselect the charts from here. Go to the visual, go to the canvas settings. Yes, canvas setting. Now you can see the vertical alignment is top. Let me make it middle. So my dashboard will be in the middle of the page now. Okay, right? So we have seen filters, visualizations, and data. Correct, and I have shown you Power Query editor also. I have shown you how we can, where we can write text. Okay, and there are many other features that are available in Power BI. We will discuss all of them in the coming classes. Okay, any doubts from your side? No. I want to just ask, is there any separate Discord group for this data analysis and this thing? Discord group? Uh, I don't know. I don't have access. okay, okay. Okay, let me check with this management. Sure, you can. Ma'am, is there any class on 10th? Because we have a test on 10th. 10th, which day it is? 10th is Saturday. You mean the coming Saturday, right? Yes. What you people want? You want the class or you don't want to attend? If you people are not coming in the class, then what should I do in the class? We वो आप only ऊपर ही one decide day we करते can हैं. skip for हाँ, 10th. okay, if you want. Means 10th, Okay. 10th and 11th, I think starting from 10th 6 p.m. up till 11th 12 p.m. midnight. It is like this. So on Saturday, I think in the morning there will not be test. From the evening 6 p.m. it will start. So on 11th, I think it should interfere. No, so for the test itself ना, देखो टेस्ट के लिए तो आपके पास बहुत सारा टाइम है. आप कभी नहीं भी नहीं, ये 2 घंटों हाँ वो तो है वो खैर आप उसमें कभी भी कर. अगर आपको प्रिपरेशन करना है और उसकी वजह से क्लास छोड़ना है तो बात अलग है, तब नहीं क्लास नहीं नहीं होगी. नहीं, प्रिपरेशन तो जो हो रखी है वो हो ही रखी है, बट मैं ये कह रहा था कहीं टाइम इंटरफेयर ना करे ना टेस्ट का, इसलिए कह रहा था मैं। देखिए, अगर क्लास का टाइम यही रहता है तो आप अपना टेस्ट कभी और भी दे सकते हैं. वो उसके हाँ लिए आपके हाँ पास टाइम है, पूरा एक दिन है, तो कभी भी 2 घंटे या 3 घंटे का वो होगा, वो आप हाँ निकाल के कर सकते हैं टाइम. ठीक है, ठीक मैं है. बस कंफर्म कर रहा था ना, जैसे पिछली बार मैनेजमेंट ने बोला था कि आज टेस्ट है तो आज क्लास नहीं होगी, तो इसलिए मैं कंफर्म हाँ, कर वो रहा था मैंने कि ही उनको बोला था क्योंकि आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमारा टेस्ट होगा, तो अच्छा इसीलिए मैंने उन्हें पूछा था कि क्लास रखना है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि शायद आप लोग प्रिपरेशन करें. ठीक है, ठीक है, तो तो कोई इशू नहीं इसलिए. है, जो हो रखी है प्रिपरेशन वो तो हो ही रखी है, बस अब क्लास है अगले, उसमें दोनों दिन होगी क्लास, मतलब सैटरडे संडे अगले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. जैसे हम फिर ये पावर बीआई का मोस्ट ऑफ द सेक्शन कवर कर लें तो आप लोगों को फिर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा. यस मैम। ओके,
So anyone else want to ask something? ओके, फाइन। ठीक है, तो आप लोग क्या करके रखिएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप अगर आप हैंड्स ऑन अभी साथ क्लास के साथ साथ करना चाहते हैं, सो यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट एट योर सिस्टम, एंड देन आई विल गिव यू वन सैम्पल डेटाबेस, और उसी के ऊपर मैं वर्क करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे टैक्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेटा का, और फिर हम लोग विजुअल्स क्रिएट करें। ठीक है, और ओके मैम। अगर ओके। हाँ बताइए, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो नो। ठीक है, तो आज जो पावर बीआई में मैंने आपको बताया वो आपको सब समझ में आ गया है ना? फिर अभी you don't need to worry about all these things because we are going to explore these things uh, in the coming classes deeply. ओके, तो हम लोग ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने सीक्वल हर एक कंसेप्ट जो है एग्जांपल और उसका सिंटेक्स देख के, उसका रिजल्ट देख के, उसको वापस से ये चेक करके वेरीफाई करके कि हमने जो क्वेरी लगाया वैसा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसे बहुत डीपली स्टडी किया है, तो वैसा ही हम पावर बीआई के साथ भी करने वाले हैं, क्योंकि टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद पावर क्वेरी एडिटर ट्रांसफॉर्मेशंस वेयर वी यूज एम लैंग्वेज। ठीक है, so am language and text, they are very wide. Okay, even if I can understand 50% of them, it is a very good thing for me. Okay, so it is a never ending process of learning all these things. Okay, so I request you can put your efforts yourselves also, so that आपको यहाँ पे चीजें जल्दी समझ में आए। जैसे सीक्वल में मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो फिर आपको आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ आल्सो। हेलो मैम। हाँ बताइए। हेलो, बोल रहे हैं मैम। सर, यू कैन शेड्यूल द क्लास ऑन थर्सडे फ्राइडे। कौन बोल रहे हैं? मैं कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं कि थर्सडे या फ्राइडे को क्लास रखें, ऐसा? हाँ सर, रख दीजिए। अच्छा, देखिए, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास रखने के लिए मेरा ऑफ होना चाहिए उस दिन। ठीक है, तो अभी जो कमिंग वीक है उसमें मेरा ऑफ नहीं है। जो पिछले थर्सडे को हमने क्लास रखी थी उस दिन वर्कर्स डे था, तो मेरा ऑफ था। ठीक है, अगर आप सैटरडे को क्लास नहीं करना चाहते हैं तो नहीं रखते हैं, आगे किसी दिन कर लेंगे, लेकिन कमिंग वीक में क्लास नहीं हो सकता है वर्किंग डे में। ओके, सर, मैम बोल रहे हैं ये सर पावर बीआई का फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ ये फर्स्ट ही है, आपने लेट ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, मैंने सुन रहा था, बट सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, मतलब। हाँ ये फर्स्ट क्लास है, अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू बताया और ये बताया है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इन्हें डीपली अंडरस्टैंड करेंगे आगे जब क्लास होगी एक एक टॉपिक को। जैसे आपको सीक्वल समझ में आया, सीक्वल का क्लास अटेंड किया था आपने? हाँ, सीक्वल का समझ में आ गया। हाँ, तो वैसे ही एग्जांपल्स के साथ हम लोग सारे कंसेप्ट सीखेंगे, और जहाँ पे भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सर ये वो ये सर आपको ये सब चीजें। मतलब ये जो डायग्राम आपने लिखा है ना, हम्म, ये तो पाई चार्ट है ना? हाँ ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये तो पाई चार्ट है। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला डैशबोर्ड, इसमें सबसे पहले ये पाई चार्ट है, फिर ये डोनट चार्ट है जो अभी सेलेक्टेड है, सेल्स बाय मार्केट, इट इज अ डोनट चार्ट, एंड देन इट टॉप 10 कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट नेम, ये जो चार्ट है ये कॉलम चार्ट है।
टॉप 6 प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट नेम ये बार चार्ट है, ओके। एंड टॉप 6 लॉस बाय प्रोडक्ट नेम ये भी एक बार चार्ट है। सेल्स बाय रीजन ये मैप चार्ट है, ठीक है। और ऊपर में आप जो देख रहे हैं सर सेल्स, मैम बोले सर when the starting the pie chart sir 16.52%, sir is mathematical calculation is 100% is the 100% is the 5 and 1% and 16%, ऐसा ही निकालना पड़ेगा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके? नहीं आपको नहीं निकालना है, ठीक है। आपको बस पावर बीआई को बता देना है कि मेरे को एक डोनट चार्ट बना के दो और उसमें परसेंटेज शो करो, ठीक है। जैसे सेल्स बाय मार्केट का एक डोनट चार्ट बनाओ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेज 1 पे बताया आपको, देखिए, वेट कीजिए, ठीक है। ये वाला चार्ट देखिए, ओके। सो एज यू कैन सी आई क्रिएटेड दिस चार्ट। मैंने ये जो चार्ट बनाया है यहाँ पे, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले डोनट चार्ट यहाँ से सेलेक्ट किया विजुअलाइजेशन से, ठीक है। जैसे मैं एक और करती हूँ, अभी आपके सामने दोबारा बनाती हूँ। अगर अगर मैम इस पाई चार्ट को जब डिग्री में देगा, मतलब 5 डिग्री 7 डिग्री में देगा? नहीं नहीं, डिग्री में नहीं देगा, वो परसेंटेज में देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ परसेंटेज पे में ही आता है, मतलब कभी कभी तो डिग्री पे वो आ जाता है 5 डिग्री, मतलब 360 डिग्री निकालना पड़ेगा, मैंने होल सर्कल इज द एंगल इज 360 डिग्री। दैट इज 100% राइट, 360 हाँ डिग्री इज 100%, हाँ। ओके। सो इसके जो पार्टीशंस होंगे वो कुछ कुछ परसेंटेज में आएंगे। अगर आपको परसेंटेज देखना है देखिए, नहीं देखना है तो हाइड कर दीजिए, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। सिर्फ आपको वैल्यूज देखनी है तो सिर्फ वैल्यूज में देखिए, ठीक है। तो ये तो फिर चार्ट कोई कैसे इसमें बना। मैम बोले से कोई हाँ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ना? हाँ, नहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो पावर बीआई खुद कर देगा। आप उसे बोल दीजिए कि आप ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करिए, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे डोनट चार्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से मार्केट और सेल्स ये दोनों उठा के मार्केट को लीजेंड पे डाल दिया और वैल्यूज में सेल्स को डाल दिया। तो ये वैल्यूज में मुझे सेल्स दिखा रहा है और जो पार्टीशंस दिखा रहा है ना, ये लीजेंड है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट के बेसिस पे मुझे सेल्स की वैल्यूज दिखा रहा है अभी। तो मैंने सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसने मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा दी। गॉट इट। हाँ ओके मैम। ओ मैम बोले से पावर बीआई का इंस्टॉलेशन कैसे करे सर, इसका फ्री वर्जन है? देखिए, आप पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करके जाइएगा, गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए, ठीक है। वहां पे आपको डाउनलोड वाला फाइल दिखा देगा जहाँ से आपको डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही इजी स्टेप होती है, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ठीक। ठीक है। ओके, अभी किसी को कोई और डाउट है? नो डाउट, ओके। देन let me disconnect the class and we'll meet on Saturday. But if you people don't want any class on the coming Saturday, you can सर inform to the management. मैम हाँ, एक बात बोल रहा हूँ सर, ये सर पाई चार्ट का फंक्शन मैंने एक बार एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया था, हम्म। तो एसबीआई पीओ में सर मेंस पे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एसबीआई पीओ में सर ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन करके निकलना पड़ेगा। डीआई में आता है, हाँ वो डीआई हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ये टूल यूज कर रहे हैं ना पावर बीआई वाला, तो वो आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। यस मैम। इसमें हमें प्लस माइनस मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं निकालना है, वो आपको खुद ही वो सारा कैलकुलेशन करके देगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फील्ड्स को, ठीक है। ओके देन,
हाँ, मैं बोल रही थी कि अगर आपको सैटरडे को क्लास नहीं रखवाना है तो आप लोग मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर क्लास संडे को होगी, सैटरडे को नहीं होगी। पर अगर सैटरडे को आप फाइन है कि सैटरडे को क्लास हो, तो फिर सैटरडे को क्लास हो जाएगी। ओके, लेट मी डिस्कनेक्ट, बाय बाय, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीकेंड। थैंक यू, Thank you. बाय।